प्रस्तुत 45वां प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में आज चर्चा होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सभी वो अपने विचार रखें। पर्याप्त सबको अवसर दूंगा, लेकिन सब बोल लें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। From the House, under what rule this, whether it is 184 or 193, under what rule? आइटम नंबर 14 मैंने शुरू किया है। इसका विषय श्री राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है। क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह उन सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है जो अपने राष्ट्र और राष्ट्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट और ब्रॉडर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सरकार को ही नहीं, बल्कि सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैं फिजिक्स का शिक्षक भी रहा हूं। यहां पर मौजूद हमारे कई ऐसे साथी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम सभी यह बात जानते हैं कि स्पेस साइंस विज्ञान का है कि एक फ्रंटियर एरिया हुआ करती है। अध्यक्ष महोदय, जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, और उसी प्रकार स्पेस साइंस भी एक विज्ञान की फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी चाहिए और उच्च गुणवत्ता के हमें शिक्षक भी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज चाहिए होती है जो साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सके, ऐसी हमको इंडस्ट्रीज भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं, यह एक और इसरो की सफलता तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है, वह अपनी आज शेप ले रहा है। यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है, और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स और रिसर्चर्स आज मिल रहे हैं। इसलिए आज हम किसी उपलब्धि तक पहुंचते हैं तो उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय,
जिन्होंने इस यात्रा में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और राष्ट्र के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया है। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के, कुछ साइंटिफिक ऑपरेटर्स के केवल डेवलप कर देने भर से नहीं है, यह हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की यदि मैं बात कर रहा हूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा आशय यह है कि वैज्ञानिकता और तार्किकता ये दोनों हमारी सोच में हो, वो हमारे बात और हमारे व्यवहार में हो, और वो हमारे स्वभाव में भी। आवश्यक नहीं हम जब विज्ञान का विषय पढ़ें तभी हम साइंस से दो चार हों, बल्कि हम आर्ट्स, म्यूजिक और साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी पढ़ें तो हम उसमें भी साइंटिफिक अप्रोच रख सकें। मैं इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की यहां पर अध्यक्ष महोदय बात कर रहा हूं, और हम सब इस संबंध में बड़े भाग्यशाली हैं अध्यक्ष महोदय कि यह टेम्परामेंट प्राचीन काल से ही हम भारतवासियों को विरासत में मिला हुआ है। आप देखें, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हों या फिर उपनिषद देख लें या फिर स्मृति ग्रंथ देख लें, सर्वत्र आपको विज्ञान या फिर विज्ञान से युक्त विचारों के दर्शन करने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक आदि से जुड़े जितने भी फार्मूले यानी सूत्र हैं, हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये दिखाई देते हैं, जो ग्रंथ हमारी संस्कृत के आधार हैं। इनके मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन लंबा समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है, और कुछ ऐसे लोग हमारे सदन में भी हो सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीच विरोधाभास है। कुछ ऐसे भी मानने वाले लोग हमारे देश में हैं। यहां तक कहा जाने लगा कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो आप पीपल की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप नीम की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप तालाब की पूजा कैसे कर सकते हैं, या फिर आप गाय को माता कैसे कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप वैज्ञानिक की तरफ सोचते हैं तो मूर्ख की पूजा कैसे कर सकते हैं, यह कहने वाले लोग हमारे देश में हैं। महोदय, बात तो यहां तक अब होने लगी है कि संस्कृत का विरोध करना, विरासत का विरोध करना, यह प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव होने का सूचक हो गया है। और प्रगतिवाद वह नहीं रह गया जो प्रगति की बात करे, बल्कि प्रगतिवाद वह हो गया जो अपनी संस्कृत और विरासत का केवल विरोध करे, वह भी इसलिए कि उसे विरोध करना है। पूछा जाने लगा कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भला आपस में क्या लेना देना है, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। भारत में कभी धर्म और विज्ञान का सामंजस्य रहा ही नहीं है, यह भी कहने वाले लोग हैं। विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों का ऐसा भी आरोप रहता है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने सुना था कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संस्कृति विज्ञान की विरोधी होती है। मैं इस सदन के माध्यम से उनके इन प्रश्नों का जवाब देने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भारत में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी संस्कृति विज्ञान की विरोधी है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को न तो हमारी संस्कृति का स मालूम है और न ही विज्ञान का व मालूम है। हमारे जो भी साथी विज्ञान का उद्गम पश्चिम के विचारों से मानते हैं, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो मालूम होगा निश्चित रूप से उन्हें कि पश्चिम में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चर्च और धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाने पर, वैज्ञानिक बातें कहने पर व्यक्तियों को जहर दे देना या उन्हें जिंदा जला देना यह आम बात सी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको अपने वैज्ञानिक विचार छिपाकर कहने पड़ते थे, और आज से लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जब कहा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, तो क्या उनका विरोध हुआ था? बाराहमीर ने जब यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है,
क्या किसी व्यक्ति ने वाराहमिहिर के इस सिद्धांत को अधर्म कहा था? जब भी भारत में किसी ने कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है अध्यक्ष महोदय, तो भारतीय समाज ने उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित किया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि संस्कृति के बगैर कल्चर के बगैर, विज्ञान और विज्ञान के बगैर कल्चर या संस्कृति अधूरी है। संस्कृति और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही अध्यक्ष महोदय वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मनुष्यता के लिए भी यह आवश्यक है। इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में भूस्खलन के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई हुई थी। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की इसकी जानकारी होगी, जिसके कारण एक सुरंग में हमारे कुछ मजदूर फंस गए थे। अब इससे निपटने के लिए यहां पर विज्ञान की भूमिका सामने आएगी। हमने सेंसर आदि के माध्यम से यह पता लगाया कि मजदूर सुरंग में कहां फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को वहां से निकालने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा कोई न ले, जैसे ही मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही इसने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी तेजी के साथ जय घोष किया, बद्री विशाल की जय। अध्यक्ष महोदय, इस वाकये ने सारी दुनिया को बताया कि धर्म और विज्ञान किस तरह से यह आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है धर्म और विज्ञान, बल्कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विज्ञान ने उस मजदूर को सुरंग से बाहर निकालने में अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उन मजदूर बंधुओं को सुरंग के भीतर जिसने जिजीविषा की शक्ति प्रदान की, जिसने साहस प्रदान किया, जिसने मनोबल प्रदान किया, जिसने आखिरी समय तक प्रयास करते रहने की शक्ति प्रदान की, वह और कुछ नहीं, हमारा सांस्कृतिक विश्वास ही था अध्यक्ष महोदय, जिसने कि यह संबल उन्हें प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, वह हमारी कल्चर, वह हमारी संस्कृति ही थी जिसने सुरंग में फंसे उस मजदूर को यह भरोसा दिलाया कि वह इस संकट से बचकर निकल जाएगा, उसके ईश्वर इस संकट से उसे निकाल लेंगे। यह उसका विश्वास था, भरोसा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति इंक्लूसिव नेचर की है, समावेशी या स्वभाव की है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें अखिल मानवता के बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। हम सबने देखा कि जियो पॉलिटिकल दृष्टि से काफी कठिन जो वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद हम G20 समिट का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल आयोजन कर सके, एवं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी हम कंसेंसस जुटाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से दिया गया संदेश है, जिसमें पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का यही विश्वास, भारत का यही बंधुत्व का भाव प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता पर भी मुखरित किया, जब उन्होंने यह कहा था कि यह केवल भारत की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की यह सफलता है। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान तो वैल्यू न्यूट्रल होता है। ये वैल्यू न्यूट्रल क्या है, मैं आगे इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान जैसे अंतरिक्ष यान हो, या परमाणु के भीतर छिपी शक्ति हो, या फिर DNA एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हमेशा यह मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वैल्यू न्यूट्रल होता है। विज्ञान हमें परमाणु शक्ति का ज्ञान दे सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह संस्कृति ही है, वह कल्चर ही है जो हमें मार्ग दिखलाएगी उस परमाणु शक्ति का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में स्वयं के विकास में करते हैं, या फिर हथियार के रूप में अन्य का विनाश करने में हम करते हैं। कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है अध्यक्ष महोदय, वैसे वैसे
हमारे संस्कारों का महत्व भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ता जाता है। प्रारंभ में मानव के पास बहुत सारे विकसित हथियार नहीं थे। ऐसे में यदि उससे कुछ नुकसान भी होता था तो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। पर अध्यक्ष महोदय, आज जब मानव के पास परमाणु शक्ति आ गई है और मानव ने चंद्रमा तक पहुंचने के भी रास्ते खोज लिए हैं, तब ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग भी उसी पैमाने पर संभव है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जर्मन फिलॉसफर नीत्शे ने गॉड इज डेड कहकर अपने महामानव को सामाजिक नैतिकता से मुक्त किया, तो उसका नतीजा जर्मनी में नाजीवाद के कहर के रूप में प्रकट हुआ था। जर्मनी में हुए नरसंहार में मानवता को खत्म करने के लिए जो अपरेटस, जो उपकरण प्रयोग में लाए गए थे, जिन हथियारों या फिर जिन केमिकल्स का प्रयोग हुआ था, निश्चित रूप से वे सभी विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन नैतिकता और मानवीयता के गुणों के अभाव में उन सभी वैज्ञानिक खोजों का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वह निश्चित ही विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। वह विज्ञान की शक्ति के प्रतिनिधि थे, पर अभाव था तो धार्मिक शक्ति और नैतिक शक्ति का अभाव था। अगर उनके भीतर धार्मिक और नैतिक शक्तियां यह प्रबल होती तो इतिहास को इस काले कृत्य से बचाया जा सकता था अध्यक्ष महोदय। इसलिए विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले अध्यक्ष महोदय, विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, वह संस्कृति और संस्कारों के बिना सदैव अधूरा रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि साइंस गिव्स मैन नॉलेज विच इज पावर, रिलीजन गिव्स मैन विजडम विच इज कंट्रोल। अध्यक्ष महोदय, एक बात पर मैं समझता हूं कि ध्यान देने की हम सभी को जरूरत है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैज्ञानिक किसी यान को चांद या मंगल पर भेजने के लिए करते हैं, कमोबेश उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल में भी काफी हद तक किया जाता है। पहला उपयोग मानवता के विकास में होता है अध्यक्ष महोदय, जबकि दूसरा उपयोग मानवता के विनाश में होता है। पर अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी रुचि है कि कुछ राष्ट्रों का ध्यान पहले वाले उपयोग पर अधिक होता है और कुछ राष्ट्रों का ध्यान दूसरे वाले उपयोग पर अधिक होता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार कुछ लोगों का यह भी आरोप रहता है, अब देश में ऑलरेडी जमीनी विकास के इतने कार्य करने के लिए पड़े हैं जिसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, तो ऐसे में चंद्रयान जैसे मिशन भेजने की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का भी जवाब मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम इस प्रकार के मिशन भेजते हैं या फिर हम किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हम करते हैं, तो इसका जमीनी विकास से किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। हम यदि स्पेस रिलेटेड कोई भी मिशन भेजते हैं तो बाहरी तौर पर दिखने में सिर्फ स्पेस से रिलेटेड यह लग सकता है हम सबको, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव आम जनमानस पर भी पड़ता है। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, हमारे यह स्पेस प्रोग्राम्स भारत का तो नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन मिशन का जो बहुआयामी उपयोग होता है उसका प्रभाव आम जनता के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। स्पेस मिशन हमें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे यदि हम इसके माध्यम से रेनफॉल पैटर्न यानी वर्षा होने का जो पैटर्न है, इसका बेहतर प्रेडिक्शन यदि कर रहे हैं तो हमारे किसान बंधु बांधवों के लिए फायदेमंद आगे हो रहा है। यदि हम इसके माध्यम से चक्रवात, साइक्लोन को यदि हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हमारे कोस्टल एरियाज में रह रहे लोगों के लिए भी अध्यक्ष महोदय यह लाभदायक हो। इस प्रकार के प्रेडिक्शंस हमारे मछुआरों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यह तो मैंने एक दो उदाहरण केवल दिए हैं अध्यक्ष महोदय। बाकी स्पेस एप्लीकेशन से डेवलपमेंट में जो मदद मिलती है उससे भी मैं समझता हूं सदन के अधिकांश सदस्य अच्छी तरह परिचित हैं।
इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब भी हम इस प्रकार के मिशन स्पेस में या फिर चंद्रमा और सूर्य की ओर भेजते हैं तो सुदूर गांव में बैठे किसी बच्चे के मन में साइंटिफिक टेम्परामेंट स्वाभाविक रूप से जगता है और उसके भीतर भी इस बात की अलख जगती है अध्यक्ष महोदय कि वह भी आगे चलकर कुछ ऐसे ही करेगा। उसके अंदर यह प्रेरणा आती है कि एक दिन वह भी वैज्ञानिक बनकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा और यही कुछ करने की तमन्ना ही अध्यक्ष महोदय राष्ट्र को स्वाभाविक रूप से आगे ले जाने का काम करती है। चंद्रयान 3 की सफलता से कितने रामानुजन, कितने भाभा या साराभाई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े होंगे, यह हमें आज नहीं कुछ वर्षों के बाद यह पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम संस्कृति और विज्ञान दोनों को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि हम एक को महत्व दे रहे हैं तो दूसरे का महत्व कम हो जाएगा। यह कोई जीरो सम गेम नहीं हुआ करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषियों मनीषियों ने वर्षों पहले विज्ञान को न केवल धर्म के साथ जोड़ा बल्कि लोगों को इसके व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बतलाया है। उनका मानना था यदि विज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संवार कर मनुष्य के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए लगाया जाए तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आप धर्म बन जाता है। यही वजह है कि हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें विज्ञान स्वाभाविक रूप से यह पिरोया हुआ हम पाते हैं। उदाहरण के तौर पर वैदिक रिचुअल्स में, स्वल्भ सूत्रों में ज्योमेट्री का सिद्धांत ये निहित पाए जाते हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूंगा इस सदन को अध्यक्ष महोदय, जैसे हवन कुंड हम बनाते हैं तो वह भी हमारे प्राचीन ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पर ही आधारित होता है। यह बिल्कुल हमारी जनता के मन में, उनकी सोच में यह पूरी तरह से रचा बसा है और यही कारण है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सांस्कृतिक विरासत की महत्ता को अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी चंद्रयान 3 की सफलता के नायक डॉक्टर यश सोमनाथ, जिनका पूरे सदन ने अभिनंदन किया, उनके साथ सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया, डॉक्टर यश सोमनाथ जी ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वेदों में कई सारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली बातें कही गई हैं। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का तो संस्कृत के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का ही वह अंग मानते थे। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो लोग यह कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से विरक्त होकर विज्ञान को अपनाना चाहिए, दरअसल उन लोगों का यह समझना पड़ेगा उन्हें कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अध्यक्ष महोदय, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, रक्षा मंत्रालय का दायित्व मेरे ऊपर है और देश की सुरक्षा का कार्यभार देख रहा हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो मैं रास्ते मैंने सोचा कि चंद्रयान 3 की सफलता को देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं किस नजरिए से देखता हूं, इस पर भी मैंने अपनी कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। मैं अपनी बात पर आऊं इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, और कुछ एक उदाहरण भी इस सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। आप सभी सदन के लोग अच्छी तरह अवगत हैं कि कुछ ही समय पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था। उसके कुछ समय बाद ही सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी आयोजन उनके द्वारा किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले का एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का काम भी वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए अध्यक्ष महोदय। और राम मंदिर का एक और उदाहरण इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय मैं देना चाहूंगा।
जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राजा जी को अयोध्या में निवास करना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में ही निकल गई कि रामलला के मंदिर का निर्माण कभी होगा कि नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उन भक्तों ने इसे बस एक सपना भर ही मान लिया था, कभी न पूरा होने वाला सपना ऐसा मान लिया था। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास देखिए अध्यक्ष महोदय, कि आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष के एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। राष्ट्र के प्रयासों से भगवान राम अपने नए अवतार में जल्द ही जनता के सामने होंगे और यह भारतवासियों की, मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार यह उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखिए। गंगा जैसी अनेक नदियों का पुनरुद्धार किया गया। हम देशव्यापी अभियान चलाकर हम गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की सफाई और उनके संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक उपक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी चीजों को सहेजने और सुरक्षित रखने का वो काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से भी, मैं समझता हूं, सदन के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, मैं समझता हूं, हम सभी समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। अब तो पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। पूरी हिम्मत है। पूरी हिम्मत है। मत 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 इतिहास में मत ले जाओ अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाओ। माननीय सदस्य प्लीज। चर्चा चीन पर भी। अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन ली। माननीय सदस्य आपको मौका देंगे जब आप बोलना, सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने को अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से हमारे सदन के सम्मानित सदस्य अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में भी अवगत होंगे। अब तो स्पेस और साइबर सुरक्षा, स्पेस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए नए डायमेंशन की जुड़ गए हैं अध्यक्ष महोदय। पर इनके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी का एक और भी आयाम है जिसमें सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी बाकी सब में है, और वह डायमेंशन है हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का। और इसे मुझे कोई नाम देना हो तो उसे मैं सांस्कृतिक सुरक्षा और कल्चरल सिक्योरिटी का नाम यहां देना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहाँ कल्चर अथवा संस्कृति के बारे में कुछ कह रहा हूं, उससे मेरा मतलब हमारी जीवन पद्धति से, हमारे लाइफ सिस्टम से। संस्कृति से मेरा मतलब हमारे खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन और हमारे विचारों से है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए, जिस तरह से वहां की सीमाई सुरक्षा और बाकी अन्य चीजों की सुरक्षा आवश्यक होती है, उसी प्रकार उसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहां की संस्कृति की सुरक्षा भी
उतनी ही आवश्यक होती है। और अध्यक्ष महोदय, और इन उदाहरणों से मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारी सरकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को तवज्जो देते हुए सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रति भी उतनी ही गंभीर है जितनी अन्य बाकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब यहां पर चंद्रयान की चर्चा हो रही है, तो मैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इन उदाहरणों को आपके सामने क्यों रख रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये दोनों निश्चित रूप से अलग अलग विषय हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, पर ध्यान से देखेंगे तो यह सदन के सभी सम्मानित सदस्य यह पाएंगे कि इनके भीतर एक गहरा संबंध है, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। अध्यक्ष महोदय, विश्व का इतिहास उठाकर कोई देखे तो आप पाएंगे कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति की हो। दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। जब तक संस्कृति समाज को जीवंत नहीं करती, उन्नत नहीं करती, उसे एक दिशा नहीं देती, तब तक समाज जड़ बना रहता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर हम और आप अपनी गरिमा, अपनी आगामी पीढ़ी को यही बताएंगे कि अब तक हमारा जितना वैज्ञानिक विकास हुआ है वह केवल बाहर देशों के ज्ञान की नकल पर ही हुआ है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में आगे बढ़ा पाएंगे? धीरे हमारे अंग्रेजों ने अगर हमें अब तक यही पढ़ाया हो कि हमारा सारा का सारा ज्ञान दूसरे देशों की कॉपी भर है, उनकी नकल भर है, तो क्या श्री डॉक्टर सोमनाथ एवं इसरो के अन्य वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान के बल पर अध्यक्ष महोदय कभी चांद तक पहुंचने का सपना शायद वह कभी न देख पाते? अगर उन्हें इस बात का विश्वास हुआ, अगर उनके मन में संकल्प जगा, तो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज आर्यभट्ट थे, उनके पूर्वज वराहमिहिर थे, उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज भास्कराचार्य थे, उनके पूर्वज ब्रह्मगुप्त थे और उनके पूर्वज सवाई जय सिंह थे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, हम सोचे कि एक बच्चा है जिसे समाज की प्रगति में केवल विदेशी नाम पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा बच्चा है जिसे ऐसे नाम पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके अपने समाज से रहे। ऐसे में किस बच्चे से आप अधिक कॉन्फिडेंस और मनोबल की उम्मीद करेंगे? यह स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय कि वैसे तो मुझे बाहरी नामों से कोई इतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ज्ञान विज्ञान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, पर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल बाहरी नाम यदि छाए रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बल पर समाज के विकास के सपने को जीवन में कभी नहीं देख सकता है। उसमें सपने भी आएंगे तो बाहर के समाज के विकास के ही सपने आएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब हम महिलाओं और छोटी बच्चियों को इंस्पायर करने की बात करते हैं तो हमें यह प्रयास करते हैं कि उनके सामने विमेन आइकन का उदाहरण रखें। तो जब हम भारतीय बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं, तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम उनके सामने भारतीय आइकन्स का भी उदाहरण प्रस्तुत करें? इसलिए अगर हमें अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है अध्यक्ष महोदय, हम अपने समाज और संस्कृति से सीखें, हमारे अपने आइकन्स को अपने बात व्यवहार में प्रतिष्ठित करें और उनका अनुकरण करें। यही हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा और वह यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता में देश की नारी की शक्ति की योगदान की मैं यहां चर्चा करूंगा। पूरा सदन अच्छी तरह जानता है कि इस मिशन में महिला साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह मिशन अगर इतना सफल हो पाया है तो इसके पीछे हमारे देश की नारी शक्ति का समर्पण, उनका त्याग और राष्ट्र को नई पहचान देने की उनकी तमन्ना रही है अध्यक्ष महोदय। और संसद का यह विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन विधेयक को समर्पित सत्र है, इसलिए इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे में मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक को इसरो की महिला साइंटिस्ट और उनके साथ भारत की पूरी फीमेल साइंटिफिक कम्युनिटी को
कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रस्तुत यह मैं उपहार में के रूप में इसे मैं देखता हूं नारी शक्ति बंधन को, अध्यक्ष महोदय। और यह सदन और राष्ट्र इसरो की महिला साइंटिस्ट और हर भारतीय बेटी को यह नमन करता है, उनकी सराहना करता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अपनी बातों को सार रूप में मैं यहां रखना चाहूं तो यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता कोई एक्सेप्शन नहीं है या कोई अपवाद नहीं है। यह सहस्राब्दियों से चली आ रही हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धारा का एक स्वाभाविक और सहज रूप से एक विकास है, अध्यक्ष महोदय। इस सफलता के सूत्र हमारे अतीत में ही छिपे हैं। ऐसा अतीत जहां वैज्ञानिकता एक स्वभाव के रूप में विद्यमान थी हमारे यहाँ, जहां विज्ञान और आस्था के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था। हालांकि विदेशी आक्रांताओं के चलते कुछ समय के लिए थोड़ा पिछड़ापन आ गया था, पर हम एक बार फिर से हुंकार भरते हुए पहले से भी अधिक ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं और सूरज, चांद, तारे अब हम छूने के लिए तैयार हैं और वहां पहुंच रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में बुद्धि के देवता श्री गणेश प्रथम पूज्य, ओम श्री गणेशाय बोलकर ही हम कोई काम प्रारंभ करते हैं, एवं विद्या की देवी सरस्वती प्रथम आराध्या हो, वह देश तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट को आत्मसात करते हुए सदैव एक नॉलेज सोसाइटी रहा है। हमारे यहां कहा गया है तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी मे व्हाट वी स्टडी बी रिप्रेजेंटेटिव, कि प्रार्थना करने वाले भारतीयों को सिर्फ चंद्रयान तक ही नहीं रुकना है, अध्यक्ष महोदय, बल्कि उसके आगे जाना है। अभी अंतरिक्ष में अनेक लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी हम भारतीयों को कई मानदंड यहां स्थापित करने हैं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी की एक दो और चर्चा करके अपनी बात यहां समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत द्वारा हमारे वैज्ञानिकों का करिश्मा देखिए। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रह, इनमें से 389 424 में से 389 आउट ऑफ 424 जितने भी हमारे विदेशी उपग्रह हैं, उसमें 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं, अध्यक्ष महोदय। और विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में बहुत तेजी से एक प्रमुख स्थान हासिल कर रहा है। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्ष में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन की कमाई पिछले 9 वर्षों में हुई, और इसी तरह अब तक की अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन मोदी शासन के 9 वर्षों के दौरान आए हैं, अध्यक्ष महोदय। यह भी मैं सदन की जानकारी में यहां लाना चाहता हूं। एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम नए मिशनों को भी अंजाम देंगे, आगे नए मिशनों को भी हम अंजाम देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, समस्त देशवासियों का विश्वास है, अध्यक्ष। अभी तो यह शुरुआत ही है, अभी तो यह शुरुआत ही है। आने वाले समय में हमारा हाथ मंगल और शनि तक भी पहुंचेंगे और हमारा देश वहां भी अपना परचम लहराएगा, अध्यक्ष महोदय, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सदन की ओर से राष्ट्र के वैज्ञानिकों को नमन करता हूं, अध्यक्ष महोदय। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Honorable Speaker. I'm honored, really, to stand before this House and to speak on behalf of my party on a matter of great pride for Indians everywhere in the world, the success of our lunar mission, Chandrayaan-3, and according to the topic you've given us in the revised list of business, success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. I think my respected friend, Sri Rajnath Singh, treated us to a lecture on a slightly different subject.
But on August 23rd, Mr. Speaker, we scripted history as our unmanned moon mission's lander module made a flawless soft landing, making us only the 4th country to achieve this feat and the first to reach the uncharted south pole of Earth's only natural satellite, the moon. It is fitting, sir, that as you proposed, we observe August 23rd as National Space Day in future. How far we have come since the late 1950s, when a classic photograph by Henri Cartier-Bresson showed Indian rocket parts being transported on a bullock cart. Let me take you back, sir, nonetheless, to when our nation's scientists, led by Dr. Vikram Sarabhai, began to develop the contours of India's nascent space program in the early 1960s. Back then, the coastal village of Thumba, in the outskirts of Thiruvananthapuram, was identified as an ideal location, given its latitude and natural geological features, to allow for rocket launches and allied research. Imagine, friends in this house, a sleepy village with golden beaches and palm-fringed coconut trees, populated largely by an overwhelmingly Catholic community of fisherfolk. The catch, however, was that the community of scientists had identified a piece of an area of land, which housed in Thumba the Saint Mary Magdalene Church and the residence of the bishop himself, Peter Bernard Pereira, his own official residence. Now, in any other community or any other part of the world, even, the matter might have been put to rest right there. After all, the idea, the thought of displacing an active spiritual establishment would certainly have evoked outrage and fury, especially in today's India. But in this relatively obscure part of India near Thiruvananthapuram, where a decision of national importance and scientific progress presented itself, the community chose to make a remarkably patriotic choice, a choice for development and progress. When initial conversations with politicians and bureaucrats made little headway, something special happened. One day, when Bishop Pereira was sitting in his little office in the church, he heard a knock on the door. He said, "Who is this?" And a man in a white suit came and said, "I am Dr. Vikram Sarabhai." Dr. Sarabhai explained the importance of this area to India's scientific research in space. The bishop understood the proposed mission of the scientists, and he told Dr. Sarabhai, "Come to my church on the following Sunday." So during the Sunday service, Dr. Sarabhai was there, and Bishop Pereira presented a proposition before the congregation. "My children," he said, "I have a famous scientist with me who wants our church and the place I live in for the work of space science research. Dear children," he said, "science seeks truth by reasoning. In one way, science and spiritualism seek the same divine blessings for doing good for the people. My children, can we give God's abode for a scientific mission?" The answer from the congregation was quite literally a resounding Amen. The church and the bishop's house, as well as other neighboring inhabited areas, were handed over without protest to Dr. Sarabhai and his team. Thus was established in 1962 the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, or TERLS, which would later be renamed Vikram Sarabhai Space Center after the death of the legendary Dr. Sarabhai 9 years later. A year after TRLS was established, India launched its first two-stage rocket, our first foray into space from Thiruvananthapuram. As our late president, Dr. APJ Abdul Kalam, who was part of the original launch team in 1963, and he went on to work from the church building himself, he wrote later, looking back at this remarkable episode, "Today among us, Professor Vikram Sarabhai is not there, Reverend Dr. Bernard Peter Pereira is not there, but those who are responsible for the creation and make the flower and blossom will themselves be a different kind of flower, as described in the Bhagavad Gita," he said. And he quotes the Gita, "See the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives to all, gives freely of its love. When its work is done, it falls away quietly.
tried to be like the flower, unassuming despite all its qualities. That is what a lot of ISRO's foundations have been, sir. Unassuming, but with the power to change the world. One of the world's oldest and most ambitious, it arose from the physical research laboratory established in Ahmedabad in 1947, the year of our independence and the brutal partition with Pakistan. Our visionary first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, then created the Indian National Committee for Space Research, or INCOSPA, marking our country's official entry into space exploration. This committee was set up on the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet for the promotion and exploration of space and its utilization for peaceful purposes, a committee led by the legendary Homi Bhabha. Then in 1962, as we've seen, TRLS was established. On 15th August 1969, our 22nd Independence Day, under the trusted guidance of Vikram Sarabhai, INCOSPAR and TRLS became the Indian Space Research Organization, ISRO giving Indian space a developmental boost. There was a tragic setback, as I mentioned, when Dr. Sarabhai died suddenly of a heart attack at the age of just 52. Dr. Satish Dhawan, the head of the Indian Institute of Science in Bangalore, was invited by then Prime Minister Indira Gandhi to lead the organization because she knew that the vision and legacy of Vikram Sarabhai could only be fulfilled by someone like Dhawan. He accepted the invitation, though on condition that the headquarters be shifted to Bangalore, and guided ISRO as a leader who is still admired by many. In July of 1979, sir, our first satellite launch vehicle failed, and Mr. Dhawan, an exemplary leader, took responsibility for it. He gave a statement saying, "Dear friends, we have failed today. I want to support my technologists, my scientists, my staff, so that next year they succeed." The very next year, they did succeed. This is ISRO's history. Every setback became a stepping stone to greater success. And so we Indians are proud of our space program for good reason. Since then, ISRO has undertaken missions to the moon, Chandrayaan 1, 2, and 3, and the failure of 2 became a stepping stone to the success of 3, to Mars, the Mangalyaan Mars Orbiter mission. And we have created our own launch vehicles and satellites. Moreover, of course, as the speaker has said, India launched the Solar Observatory Aditya L1 this month and aims to put 2 or 3 people into low Earth orbits by the end of this year to emulate the legendary Rakesh Sharma, who orbited the planet on a Soviet spacecraft in 1984. Notably, Indian space research is the only program which has been a civilian program from the very beginning. We are focused on the development angle, like the use of space for rural development, weather forecasting, and communication, in addition to high-end research. And this, sir, is just the beginning. India's space program is set literally to skyrocket. Experts predict that India could account for at least 10% of the global space economy in the next decade, up sharply from 2% currently. India's space program bolsters our development, having made important contributions even in seemingly unrelated areas such as disaster management, education, healthcare, agriculture, fisheries, and urban planning. Moreover, it serves India's global diplomacy as well, sir, enhancing our credibility and influence. Those who once scoffed at the idea that a poor developing country aspired to send rockets into space must concede that India is now a technological force to be reckoned with in the world. To my mind, there is yet another sterling triumph within India's Chandrayaan moment. It has become a good occasion to recognize the alumni of unsung engineering colleges everywhere in India. Indians are rightly and justifiably obsessed with the IITs, but Chandrayaan 3's landing, especially 4 years after the failure of Chandrayaan 2, was attributable to many, many scientists from far less glamorous educational backgrounds. While the ISRO chairman, S. Somnath, is a product of TKM College of Engineering in Kollam, represented by my friend Premachandran, at least 8 of his other colleagues graduated
from the College of Engineering, CET, Thiruvananthapuram. Somnath Institution was founded in 1956 by a successful Muslim cashew merchant, Tangal Kunju Musliar, abbreviated soon enough to TKM, and has gone on to establish a stellar local reputation. While CET in my constituency, established in 1939 as the first engineering college in then Travancore state, retains its record and repute as the premier engineering college in the state of Kerala. Yes, at least 7 more engineers from CET were involved in the Chandrayaan-3 success, and there were others, alumni from small engineering colleges in Tamil Nadu, in small towns throughout India. We've had graduates of these small colleges contributing to ISRO, because let's face it, we must, yes indeed, it was in the very first launch, Dr. Abdul Kalam. We must proudly salute these alumni of unsung engineering colleges, because they serve the public sector with dedication and are the backbone of national enterprises like ISRO. As I wrote on social media at that time, if IITians went to Silicon Valley, CETians took us to the moon. I would also like to point out that many of the stalwarts in our space program have been women scientists and engineers. Some 20% of ISRO's key personnel are women. And as women increasingly excel in science and technology studies, this number may only go up. And unlike in our parliament or legislative assemblies, they won't even need reservations either, sir. I can tell you from my experience of addressing many convocations, I'm in favor. But I have been giving away prizes at many convocations of science and technology and engineering colleges. And even when the women students are a small minority, maybe 20–30% of the student body, they are 90% of the medal winners, prize winners, and honors winners. This is becoming increasingly a woman's field, and we'll all be the better for it. Now, the only thing that disappoints me today is that some in the government seek to make this their moment to bask in glory and polarize the country by speaking as if all space endeavors only began in 2014. First in the ancient years of the Vedas, and then in 2014. I mean, that's what we're hearing today. Now, the truth is, sir, that our space successes are a consequence of continuity in our national governance, and what has been achieved today stands on the shoulders of many past achievements, as I have described to you with my stories earlier. Any mature democracy would recognize that grooming the brilliance of our scientists, developing infrastructure, R&D, and global synergies on technology cannot be achieved unilaterally by any one government. This is the achievement of successive years of making the right governance choices. For example, we've heard so much about Aditya L1 mission. It began in 2006, sir. It took 17 years to be conceived, planned, executed, and finally launched this year. Thus, the Chandrayaan triumph is truly pan-Indian. Across, I hope, the political divide, it does not belong to any one person or any one party. If we all came together yesterday to affirm the solidarity we all feel for women's reservation bill, let us also come together, sir, to recognize the collective contributions of all governments in bringing glory to India's space endeavors. But after all, who can deny India owes its remarkable progress in space exploration in large part to Pandit Nehru's dedication to developing a scientific temper amongst the Indian people, his understanding of technology's role in national development, and his faith in the country's scientists. Though India was indeed beset by poverty, illiteracy, food insecurity, and disease, Nehru knew that it must and could aim for the stars. We did not have much money, and we relied on ourselves. Nehru's doctrine of self-reliance, though he didn't use the word Atmanirbharta, the concept was there, within very tight budgetary constraints, had an enduring influence on India's space program, exemplified by ISRO's decision, even in this Chandrayaan-3, to take a slower, fuel-saving approach to the moon. Both Mangalyaan and Chandrayaan-3 were the least expensive ventures of their kind, costing about 1/10 of equivalent NASA, NASA, the American space mission. They cost less even than Hollywood depictions of space. Mangalyaan costs less than the Hollywood film Gravity, and Chandrayaan costs less than Interstellar. The shoestring budget was only 615 crores.
Not just, much cheaper than G20, what our government spent on it. But this is not just a small fraction of what the US spent, but not even a third of China's budget for its own moon mission. ISRO's last 40 years spending is equivalent to NASA's 6 months of expenditure. That is the history we have to understand, sir. But they should not be punished for it. I'm looking at my good friend Jitendra Singh there. The Department of Space's budget has shockingly been slashed by 8%, down to 12,550 crore from the 13,700 crore that we were all presented in the budget estimates, sir. The cuts are highest in space technology, including the Human Spaceflight Center, as well as developmental and operational projects involving satellite launch vehicles. And space science, including space missions, has been cut by 32%. Why? NASA, sir, has been allocated $25.4 billion in 2023, and ISRO has the equivalent of $1.5 billion. That is the situation, sir. Our government needs to be more generous. Now, I want to stress that ISRO's strengths extend well beyond frugality. For Chandrayaan-3, India has also demonstrated familiarity with the major types of interplanetary spacecraft: orbiters, landers, rovers. The Chandrayaan-3 rover is rudimentary, but it speaks to an important focus area for the Indian space program, the planning and implementation of high-tech scientific missions. The data from Chandrayaan-3's scientific instruments will be crucial because the mission will be the first to physically, chemically, and thermally characterize the soil, subsoil, and air near the moon's south pole on location. No other country has done this. India has some measure of technological superiority now compared to most other spacefaring countries, and it should press the advantage by going to more places in the solar system. And of course, we must conduct stellar science. The better space-based scientific instruments currently operated by India are largely concerned with Earth observation and remote sensing. With a focus on indigenous development of technologies and techniques, we have become a premier manufacturer of both launch vehicles and satellites, and a sought-after provider of low-cost launch services to other countries. Our Polar satellite launch vehicle, with 24 successful flights, has a proven track record, and the world record that has been mentioned of the launch of 104 satellites in one go has already been applauded by the Honorable Speaker. So we have all of this to talk about. Chandrayaan-3's success strengthens the confidence with which India faces the world. The country has spent the year, as we all know, presiding over the G20, though as has been pointed out by my colleagues, we spent much more on it than we did on ISRO or on the Chandrayaan mission. But it is an influential voice for the global south. This adds to our prestige and our clout. We're also playing leading roles in other international bodies. How these relationships and how our global role generally, more broadly, will evolve remains to be seen. We're having unfortunate controversies going on this week with Canada. But nonetheless, the country's achievements in space undoubtedly strengthen our diplomatic hand, not least because of the respect they inspire in other countries. Thank you. I'll just take 2-3 minutes, sir. Among the foreign countries that have used India's space program to launch their own satellites and benefit from space cooperation include France, a space partner since 1964, which has supported India's development of launch vehicle satellites, applications, and spaceflight, has also launched several satellites using our PSLV and GSLV. Russia, another long-term collaborator on various aspects of space exploration, including some of these same things, and Russia supplied key components for the crew module of Gaganyaan, and the US, with which India has a strategic partnership in space, covering areas such as Earth observation, satellite navigation, space science, planetary exploration, launch services, and human spaceflight. So France, Russia, and the US are all involved with us. And ISRO tells us that India has pursued bilateral and multilateral relations with space agencies and space-related bodies, with the aim also of strengthening existing ties with these countries, taking up new scientific and technological challenges, refining our space policies, and defining international frameworks for exploitation
and utilization of outer space for peaceful purposes. This is the diplomatic strength I'm talking about. So the US, Israel, Singapore, Canada, Germany, Indonesia, Japan, Luxembourg, the Netherlands, South Korea, the UK have all launched their satellites using our Indian PSLV and GSLV. And as a result, the government has earned $174 million from these launches alone. It's all the more a pity that our government has trimmed the budget for space education and research between last year and this one, even though on the whole our expenditure on space has gone up, and I know Jitendra will tell us that. Educating the next generation of Indian space pioneers ought to receive more funding. I'll conclude, sir, by recalling the proud moment when India's lander touched down on the moon and Prime Minister Narendra Modi wisely resisted parochial triumphalism of the kind we've seen later, and he hailed the achievement as a victory for all of humanity. But he also correctly noted that the achievement mirrors the aspirations and capabilities of 1.4 billion Indians. By showcasing its technological prowess, India's space program reminds the world not only of our innovative capabilities, but also of our capacity to help shape solutions to global challenges in other areas, from cyberspace regulation to peacekeeping. Looking up at the sky after Chandrayaan-3, Indians can contemplate a glorious global future. We are showing the world that India can be a standard setter rather than just a follower of rules made by developed countries. New horizons beckon, for the world is now our canvas, or should I even say, the whole universe. Jai Hind. Thank you very much. कुछ आपको कहना है क्या? Okay. No, just- Okay. It's We not are my at home speech. now. We are Have at some home patience, now. it's Please. not my speech. Okay. So, She's member also. no, I'm just wanting to intervene for a minute. Huh. It's just an intervention. Have patience. Have patience. Just something very No, no, important. please. Sir, I want to make an observation, sir. Dr. Shashi Tharoorji, you're a very learned and senior member. It's very enriching to listen to his ideas every time he participates in the debate. So you said a lot of good things, sir. But I didn't want to disrupt him in the middle of his speech, but I hope I heard you correctly. You said something in between which I don't much agree to. So you mentioned, if I heard you correctly, I repeat, that there are lots of women, there are lots of girls who are entering the field of science and technology, and hopefully we would see many of them working under our space programs. So unlike our parliament, they wouldn't need reservation to be a part of the space program. I don't much agree to this, sir. It's not very appropriate. Okay. Please take it in a healthy light, sir. Okay, Just okay. yesterday, no, Ji, listen ji, to me, ji. sir. Let me complete. Just yesterday, we passed Ji, a very ji. historic bill providing reservation to women Shri A. inside Raja, the parliament. ji. So it doesn't This- sound this- very appropriate because, women second. don't just आप बैठ- women आप तो have बैठिए। these here because of their he be done. आप तो capabilities बैठ जाइए। and आप तो बैठ जाइए। जी, talents, and we please. should never. नहीं, ये इस ढंग से डिबेट तो नहीं कर सकती. No. Please sit down. हाँ. जा बस quick. आप बैठ तो जाइए. It. नहीं, आप बैठ जाइए. Sir, your आप बैठ party जाइए. has supported this आप बैठ very जाइए. historic bill, Shri A. sir, Raja, which please. means you agree to the Okay, idea okay. of providing reservation आप- to women for them बैठ to जाइए. reach इतना- out इतना- to bigger. जी. आप बैठिए प्लीज. ओनली ए राजा. ओनली नो आप भी बैठ जाइए. बाद में बात कर लीजिए. प्लीज मिस्टर ए राजा. नो. एक सेकेंड. आप मिस्टर थरूर बैठ जाइए. प्लीज बैठ जाइए. नो भाई. अधीर जी आप बैठिए. आप बैठ जाइए. आप बैठिए तो सही. आप भी बैठ जाइए मैम. Nothing is going on now. Okay. Now please. एक सेकंड. क्या कहना चाहते हैं आप? अरे आप बैठिए ना. Adhirda. I would like to clarify, since the minister, the honorable minister, who is also a good friend, appears to have misunderstood the thrust of my remarks. I would like to clarify that I meant no disrespect to either women in general or the very many honorable women in this house who have been elected without any benefit of reservation for all these years.
Okay. We have said, sir, that we need reservation because the numbers are not enough. Chaliye, And that is why we passed the women's reservation bill yesterday. Chaliye, chaliye. I'm saying that in science and technology, we already have 20% in ISRO and the numbers are going up, sir. That's my point. That's it. Thank you. जी 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 सर हो गया कुछ कहना है आपको क्या सर सर अध्यक्ष महोदय मुझे लग रहा है we need not carry this further because I'm very sure and I trust my friend Shashi ji has never been anti-woman. जी जी मिस्टर चेयरमैन सर ओके ओके लेट ठीक है मिस्टर चेयरमैन सर हाँ इट शुड बी इन गुड ह्यूमर I must ऑलवेज express यस my प्लीज gratitude. Mr. Chairman, sir, I must express my gratitude to invite me to speak on this important issue. Sir, चंद्रमा पर इतना हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए हाँ जी प्लीज चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है इतना हंगामा नहीं होना चाहिए ना प्लीज मिस्टर ए राजा ओनली यू आर गोइंग ऑन रिकॉर्ड ओनली Sir. प्लीज आप बोलिए ना sir, how can you speak, sir? अरे नहीं यू कैन स्पीक आप बोलिए House please. must come for order. हाँ बैठिए आप बैठ जाइए प्लीज यू आर नॉट हेल्पिंग द चेयर यू आप बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए हाँ प्लीज Sir, अरे भाई sir. Sir, बैठ जाइए ना प्लीज मिस्टर ए राजा बैठिए आप ये अनावश्यक है नो 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 प्लीज बैठ जाइए आप बोलिए Sir, what is this? Sir, yesterday also the same thing. Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, what? Started speaking. Sir, the chair should give us protection. Sir, what is this? Sir, every time they do this, sir. प्लीज ए राजा बोलिए Sir. बोलिए I must express my gratitude for granting me this opportunity to say a few words on Chandrayaan. Sir, of course, I decided not to speak because of my health. More specifically, the throat is not cooperating with my voice. However, having heard the speech which was delivered by the Honorable Defense Minister Rajnath Singh ji, I am confined to stand before few minutes before this August House. Sir, the Prime Minister was yesterday very magnanimous that no one can claim exclusive credit for Chandrayaan. It is a common efforts, endeavors put by the team of our scientists with political and scientific will. Sir, in spite of that, we must be very magnanimous on behalf of DMK. The role of the Prime Minister or this government bringing this Chandrayaan 3 cannot be undermined. We want to wish and greet the government. Sir, I will come to later part. Once universe and galaxy was treated as a riddle for mankind. Till 1950s. In 1950s, various countries, including USA, used to send satellites to the moon and other planets. Thereafter Russia, thereafter China. No doubt, an exact position India has
got today because of Chandrayaan that has been launched and smooth landed was effective. Sir, the parity which we claim today along with America and Russia and China will give a message that India is second to none to anybody in the space research hereafter. Sir, between 1957 to 58, when Soviet Union launched Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, and the US launched Alpha, Pandit Jawaharlal Nehru shared with his view in the parliament that this is a new age of Sputnik. Sir, I must share this house that Tamil is one of the classical language recognized by the world and this government. Sir, Tamil has have deep-rooted scientific measures in the literature. Since the Honorable Defense Minister says the Sanskrit is having such a tremendous potentiality in science, I am not defaming any language. Admittedly, this country is having two culture based on the Tamil and Sanskrit. The C.P. Ramasamy is a known educationalist who served as a vice chancellor, later the Diwan of Tiruvangur. Maybe Sasi may be well aware about his knowledge and prose. He admitted that there are two cultures in the country. One is headed by Sanskrit by way of Aryan culture, and one is Tamil in the basis of the Dravidian culture. Sir, I am entitled, having said the defense minister, now I am entitled to say what Dravidian and Tamil language says about science. Sir, you cannot imagine, when I read Tolkappiyam, that is 3,500 years back, nobody can believe. It says this country was not created by a single man. This country was produced by evaluation of science. How? Nilam, Neer, Thi, Vali, Visumbodu, Kalanda, Aindin Mayakam, Ivulaham. What does it mean in English? Sir, there is a metabolical change out of water, land, fire, air, and space, what we call Panchabhutas. Panchabhutas. The entire world that has been made because of these Panchabhutas, you cannot create a new thing. New building has come. Does it mean to say Delhi weight has gone? No. For this bench, somewhere else a tree has been cut off. So this is the science which was later, after all 200 years back, it was scientifically put into a proper phrase that the weight of the universe is constant by Newton. 300 years back, English law says by Newton that the weight of the universe is constant. But whereas 3,500 years back, Nilam, Thi, Neer, Vali, Visumbu, Aindodu Kalanda Mayakam, metabolical change of the water, land, space, everything. So, are we not entitled to have pride for 3,000 years back? You should be. Yes. Sir, Tiruvalluvar. Everybody believed that the earth is static. Other planets are revolving around, including sun. It was believed, even in the Christianity, even in the Hinduism, even in the Islam. But 2,500 years back, he said, Sulandrum Yerpinnadu Ulaham, Ulandrum Ulave Talai. He said, the earth is revolving. Earth is revolving 2,000 years back, Tiruvalluvar says. In spite of that, it is at the biggest of agriculture, at the biggest of flowing. This is the science. Sir, Bharati, last century, early century, he said, Vana Yalapo, Kadal Meena Yalapo, Sandira Mandalati Yel Kandu Delivo. Vana Yalapo, what does it mean? We will measure the space. Quiet Bharati, who is a scholar in Sanskrit, he said in Tamil, Vana Yalapo, we will measure the space. Kadal Meena Yalapo, we will measure the sea and fishes. Then ocean. Then the Sandara Mandalati Yel Kandu Delivo. We will study and research the moon, which will be benefit to the mankind. These are all the Tamil literature. You cannot find any Tamil literature as far as science. You cannot say one incident that the language Tamil is traveling as against the science. Sir, Bharati is being a Tamil and Sanskrit scholar. In spite of that, when the science comes, he did not shut down the mythological. He did not stick on the mythological value. Sir, today I am very proud as a student of Dravidian School of Thought, which was designed by Periyar EVR, and it was articulated by Dr. Annadurai, and it was came to power after Kalaignar, respected our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi.
Along with them, today, the number one Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable M.K. Muthuvel Karunanidhi Stalin, we welcome the measures that has been taken by the government to put the Chandrayaan in the correct orbit. By putting the Chandrayaan in the correct orbit, the mythological illusion that has been removed, that is the success of the Dravidian concept. Sir, by this time, I must extend my congratulations to the all scientists, those who involved in the scientific team, in the space, more specifically the contribution of Tamilian. In Chandrayaan 1, Mailsami Annadurai. In Chandrayaan 2, Sivam. In Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. Sir, these people are very proud. These people are not even went to private schools, private colleges. They belong to OBC. Very ordinary. They came from very ordinary, gullible mass and studied in the government school. In spite of that, they contributed that India has reached the moon because of not the students from convent, not from the students of any other exalted institution abroad, by the government colleges and government schools. Sir, they did not know Hindi and Sanskrit. These scientists did not know Sanskrit and Hindi. They know only Tamil and English. In spite of that, they exalted such a position. Sir, I am looking back the history of space research since 1952, as put in my friend Sasi Tharoor. Sir, rightly he said, when Indian National Committee for Space Research, INCSR, was set up by the Pandit Jawaharlal Nehru under the chairmanship of Vikram Sarabhai, and later it was developed to renamed as ISRO. Sir, I am disturbed when such a remarkable phenomenon took place and the nation got pride. We must introspect other mode of thoughts and views. Sir, I heard the defense minister very patiently. I recall my memories and checked it up with the documents in the parliament just 1 hour back. In 2004, in my 30s, I was Minister of State Health in the Council of Ministers headed by Vajpayee, Dr. Vajpayee. He is known for protecting the Raj Dharma in politics. Sir, that time, a debate was brought by the honorable member from Andhra, Jaipal Reddy, a veteran leader in Congress. The motion is drop the 3 cabinet ministers from the cabinet. One of the person he named is Murali Manohar Joshi, then the HRD minister. Sir, the motion was moved by Jaipal Reddy. The house was rapt attention. Murali Manohar Joshi was there. Atal Bihari Vajpayee was there. Then the Arun Jaitley said, I quote, I have always regarded Dr. Murali Manohar Joshi as a genius scholar, but my philosophical problem with him is that he is confused himself, history with mythology, philosophy with theology, astronomy with astronomy. And he further went, Mr. Joshi, you want to change the syllabus and you want to give a saffron syllabus for the students. I am entitled to call, he said, I am entitled to call you in the house that you are a textbook terrorist. Unquote. Sir, I was part of the government, in BJP government, no doubt. The reason is something different. This is not the place to elucidate. Nothing is different. But sir, the accusation that has been made, the accusation that was made by the Murali Manohar Joshi still continues in the mouth of Defense Minister Rajnath Singh. Sir, no doubt, government has done a great job. When the satellites were successfully sent by the America and Russia, Prime Minister Nehru wrote to the all chief ministers, please note this. We have not sent it. India did not send it. Not able to send. But in spite of that, Prime Minister wrote letter to all the chief ministers, I quote, intrusion of the man into outer space, and unquote. Letter further says, it is very important. Our narrow world, we are entangled with all kinds of rivalries in the name of caste, greed, and religion, and national conflicts
which have no meaning in this new age of science and space, unquote. Sir, when the Chandrayaan sent to the moon, naturally your mind and heart must enlarge. Whereas I feel with all my sincerity that one side you are sending the Chandrayaan to the space and your heart and brain going down somewhere else, which contradictions. What happened to my elder leader, T.R. Balu is here. Sethu Samudram project, which is a dream for us. It was completely stopped because of mythology, not by science. Sir, among the Chandrayaan celebration, sir, it is very painful. No, sir, nothing. क्या point of order है? Indian Constitution. Sir, I will finish Article 1 minute. 25. No. Some point of order is there. Mr. Raja, some point of order is there. It should be listened. आप बैठ जाइए मैम. आप बैठिए. सुनिए. आर्टिकल 25 जी जी. भारत का संविधान 25 वो कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी आदमी को यह आजादी नहीं है कि वो उसके धर्म के आस्था के ऊपर जो अटैक करे. ये भारत का संविधान कहता है. ये बार बार जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं. हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं और आपको कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए. बैठिए. ओके. देख लेंगे इसको, देख लेंगे. बैठ जाइए. जी. बैठिए. Mr. Raja, please. Mr. Raja, now please continue. Continue. And be careful. Sometimes mythology and history, they are mixed. They can't be separated altogether. You please take care of those things. Please. Okay. No. Please, बैठ जाइए. आप Mr. Raja, only Mr. Raja. Yes, please. Okay, his point is taken. आप चलिए बोलिए. Please, continue, please. Sir, ठीक है बैठिए. बोलिए. Sir. जी. बोलिए. sir, We should be Sir. careful. sir. I am repeating the Sir. words. Sometimes mythology Sir, and history, amongst they are the- mixed. sir. They are mixed. Yes, sir. Sir, I am not doing. Sir, I am not. In our nation, in our country, no. Sir. It is a tradition Sir. to tell the history through mythology. It is also a tradition Sir. there. Please now. Sir, without any Balu sir, reservation. you are very senior, sir. Sir, Please. without any reservation, cutting across the political parties, we are ready to shower encomium upon this government, the Prime Minister, no doubt. But am I not entitled to say the other side also? Sir, Chandrayaan went successfully to the moon. We are celebrating, no doubt. We are entitled. The world should know that where India is going as a superpower of 4th place after USA, after Russia, after China, no doubt. I am also Indian. I am having my own pride towards the country, towards the Prime Minister, towards the ministers. But, sir, my heart is, my heart is bleeding. Sir, my heart is bleeding. One side, Prime Minister was jubilant for Chandrayaan 3. Other side, Prime Minister was very proud to launch Vishwakarma scheme. For what purpose? At the age of 18, boys, you want to launch a scheme to enslave a barber as barber ever. To enslave a shoemaker as a shoemaker ever. To enslave a goldsmith as a goldsmith ever. No. To enslave a carpenter as a carpenter No. ever. Please. आप बैठिए ना. आप बैठिए. बालू साहब, please come to the Chandrayaan only. Vishwakarma Yojana here is not to be discussed now. Please. You repel बैठिए. it. No. You repel it. There could be different interpretation repel also. it. Mr. Raja, there could be different Sir. interpretation also. Please Sir. don't go into those details. Please. This is the minute problem for our. Sir, No. sir, when I am seeing, sir, the advertisement came. The advertisement came in the newspaper. You see the photograph. The man is chewing the shoe, and another man is moving the gold.
Is there scientific? No, Mr. Raja, please. Sir. No, sir, it doesn't mean like that. No, Sir. please. Sir. It doesn't mean like that. To help Sir, some sir, barber, sir. to help some. No, Sir, Austin will. Okay. Sir. जी. Sir. नहीं, अब बैठिए. देखिए, ये एक सेकंड. Austin. ये no. मेरा एक आपसे Sir, निवेदन है. I will complete after that. You can. जी, चलिए. Sir, the Nehru's political and scientific temper was assessed by one David Michael. He said, I quote, "The arrival of humanity on the moon was interpreted by Nehru as an opportunity to emancipate humanity in India from all cycles." Unquote. So, how we are viewing this Chandrayaan? It is not a mere scientific glory. Other side, it should give equal sociological effect to the common people to maintain equality and give all accessible science to everybody. Sir, finally, sir, I plead, government, don't give any unscientific color to Chandrayaan. Yes. America did not do that. USSR did not do that. China did not do that. Please put the name of. Please. No, I'm finishing. Sir, please put the name of Vikram Sarabhai name for Chandrayaan 3. Thank you. Yes. Very good. श्री स्वागत राय जी. Sir, I rise to speak on the पिछली बार क्या बोले थे याद है? फिर बोले क्या? Sir, I rise to speak on the success of the Chandrayaan. I congratulate S. Somnath and all the scientists of ISRO. देखिए, एक सेकंड. जब आपका बोलने का सुनिए, आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. प्लीज लिसन. आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. आपको अवसर मिलेगा बोलने का. माननीय शांत बैठिए बिजोड़ी जी. नो, बैठ जाइए आप. आपको जब अवसर मिलेगा अपनी बात कहिएगा, अपना तर्क रखिएगा. अभी जो बात कही जा रही है उसको सुनिए आप. प्लीज. Sir, please. I congratulate Somnath and all the scientists of ISRO. I may mention. अब बोलिए. I want to mention that there are many Bengali scientists from Bengal in the Chandrayaan project. Hey, तुम बैठो तो, फालतू आदमी बैठो तुम. तारा बोल नहीं, भाषण दो ना. नहीं, प्लीज. अगर सकते हो तो भाषण दो. They are scientists from Bengal, from Tamil Nadu, from Kerala, from other states, but they all are Indian scientists. Please. Sir. आप तो दादा, you know the delicacy of the thing. Now please, आप बैठिए. He doesn't need your support. Please, Sagadda. Every scientist Sir. from any region, when any we are part of seeing- India, he was Indian scientist. Ji, please. When we are seeing Okay. Chandrayaan soft landing on the moon, in front of the TV, we saw Chandrayaan, then suddenly the Prime Minister's photograph came. The whole country wanted to see the soft landing. They saw the Prime Minister photograph. Why should this happen? Chandrayaan is not the result of one particular individual's effort. It is the result of 50 years of scientific work done by hundreds of scientists throughout the country. Sir, I was very pleased to hear Rajnath Singh speak on scientific temperament. The man who spoke of scientific temperament in this country was Jawaharlal Nehru.
Scientific temperament means you do not accept anything without experiment, without logic. Science is knowledge which is certain and systematic. I am like Rajnath Singh, former professor of physics. But in my physics, while speaking on Chandrayaan, I don't bring Ram Mandir like Rajnath Singh. There's no connection between the two. Sir, 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 You continue on the. I want to say, I'm not Sir, I want to say, when somebody in top position says that Ganesh had plastic surgery in the ancient days, I do not accept this. When somebody says that Kauravas were born due to in vitro fertilization, I do not accept this. When somebody says that in Ramayana, the Pushpak Rath was a discovery by the ancient Indians, I do not accept this. I accept only that which is proved by science. Let me make it very clear. Sir, let me give a background. Sir, the background is this. In 1957, the Soviets sent the Sputnik to the space. In 1961, Yuri Gagarin became the first person in space. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space. It was at this time that Jawaharlal Nehru felt that we must go into space science. In 62, he set up the INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research, headed by Dr. Vikram Sarabhai, a cosmic ray physicist. Nehru died in 64. In 69, when Indira Gandhi was Prime Minister, the ISRO was set up. And in 72, when Indira Gandhi was still Prime Minister, the Department of Space was set up. So whatever is happening today is continuation of what Dr. Vikram Sarabhai started in 1962. His legacy. He unfortunately died in 1971 in Thumba, the space which he liked so much. So now, India has. Arey, chup karo. Sir, chup karo. Sir, India got the first success in Aryabhatta, which was completely designed and fabricated in India and launched by a Soviet Cosmotos 3M rocket from Kapustin Yar on 19th April 1975. ISRO has successfully launched almost 150 satellites since 1975. Sir, ISRO has established major space systems for communication, television broadcasting, meteorological services, resources monitoring and management, space-based navigation services. ISRO has its headquarters in Bengaluru. Its facility spreads across various centers. Launch vehicles are built at Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram. Satellites are designed and developed at U.R. Rao Satellite Center, Bengaluru. Integration of launching of satellites and launch vehicles are carried out from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Development of liquid stages, including cryogenic state, very cold state, is done in
Liquid Propulsion Laboratory at Bengaluru. ISRO has carried out 125 spacecraft missions and planned several missions including Gaganayan, an interplanetary mission such as Chandrayaan Lupex, Shukrayan and Mangalayan MOM-2. Sir, ISRO, our own organization, it has surpassed NASA in efficiency, resourcefulness and cost effectiveness. In 2005, NASA launched the solar mission that cost $550 billion. Now ISRO is planning to launch the similar solar mission, Aditya L1, at a cost of $55 million only. That is 1/10 of the cost of NASA. There are 4 types of satellites sent by ISRO. One is communication satellites, which helps our communication system. 2 is Earth observation satellite, which take the pictures of the Earth. 3 is navigational satellite, and 4 is astronomical satellite. These works are going on. What is great about Chandrayaan, that so far we are using rockets to send satellites around the Earth. They are called either geosynchronized satellites, that means speeding at the same speed as Earth, or the polar satellite launch vehicles, which are placed fixed in the poles. Now, for the first time, sir, we have gone that from a satellite, our rocket has taken a lander mission, lander and a rover onto the surface of the moon. We failed in Chandrayaan 2. Our lander crash landed, but this time there was no crash. The lander landed very softly. For one day, it sent the messages from moon, but then it had to be jettisoned. We are very happy, all of us, that India has achieved this. But we must have things in perspective. We are talking of a moon, not a moon landing, sending a lander in moon. There is a propulsion module and there is a landing module. Propulsion module takes it from the Earth orbit into the moon. Then landing module goes to the moon surface. Sir, I must remind you, आपको याद दिलाने चाहता हूं कि 57 में मैं बोला सोवियत स्पुतनिक भेजा, हम अभी मून में एक तो सॉफ्ट लैंडर भेजा 1969 में. आज से 54 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग stepped on the moon as a man. Stepped on the moon. He said, it's a small step for me, but a giant step for mankind. Giant leap for the mankind. So, हम लोग 54 नहीं है, तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए. लेकिन हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये बहुत सर्विस दिया. दे प्रिडिक्ट वेदर, कब तूफान आ रहा है, दे प्रिडिक्ट क्रॉप डेवलपमेंट, एंड दे GPS, our taxi walas use GPS now. That is also based on satellite tracking. So I want to say that Chandrayaan 3 has
demonstrated safe and soft landing on the lunar surface. It has demonstrated rover roving onto the moon. Thoda hi gaya. And to conduct in situ scientific experiments. What are the technologies there? Altimeters, laser-based altimeters, velocimeters, inertial measurement with laser gyro-based surface, propulsion system, navigational guidance and control, hazard detection and avoidance, and landing leg mechanism. ये सब हम इंडिया में डेवलप किया, यही हमारा गर्व की बात है. गर्व से बोलो, ये लैंडर पेलोड, इसमें चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, लैंगमुर प्रोब to estimate the plasma density and its variation. So इतना सर, I am concluding. I am not discussing anything controversial. तो मुझे बोलने दिया जाए. अग्रवाल जी, चेयरमैन साहब, सर मुझे यही कहना है कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत दूर जाने पड़ेगा. See, we have not mentioned, nobody has mentioned Kalpana Chawla. She went by the Columbia Space Shuttle. Her craft exploded in 2003, and she along with 7 others died. Today I pay respect to Kalpana Chawla, who was an Indian-born astronaut. सर, आज क्या है, 1 साल पूरा हुआ. क्या, किसका? फ्रैंक रूबियो एक नासा के एस्ट्रोनॉट है. वो 1 साल स्पेस में है. 1 साल इंसान स्पेस में है. He is set to return to Earth this fall after setting the record for the longest single space flight by astronaut. He arrived at the International Space Station 21st September 2022 and will return home after 371 days in space. Rubio and his fellow crew members conducted dozens of scientific investigation and technology demonstration. Sir, ये नासा 58 में सेटअप हुआ. उस समय सोवियत यूनियन आगे था. वो पहले स्पुतनिक भेजा, पहले मैन ऑन द मून भेजा, पहले मैन ऑन द मून नहीं, मैन इन स्पेस भेजा, वुमेन इन द स्पेस. लाइका मर गया, लेकिन वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहुंच गया. तो हमारा लक्ष्य जो है, आप लक्ष्य सिनेमा देखे होंगे ऋतिक रोशन का. लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए. लक्ष्य यही है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे. देश में जो कुसंस्कार है इन लोग का बीच, ये दूर करेंगे. देश को विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाएंगे जी, तभी हमारा काम पूरा होगा. सर, अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है. वो उधर ही रहता है, खाता है, ऐसा जैसा घर है. फ्रैंक रूबियो ऐसा किया है. अभी भी चाइना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया. 2 अमेरिकन हैव 1, चाइनीज हैव 1. सो चाइनीज भी स्पेस स्टेशन. नाउ प्लीज, बहुत सारे काम करना है. ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें नासा, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा. अभी एक और वक्ता है आपके. वन मोर स्पीकर इज देयर फ्रॉम द पार्टी. जी सर, हमको यही कहना है कि हमारा रैंक अभी 6th है. किसका पीछे? नासा, रशिया, जापान, यूरोप, कनाडा एंड चाइना. चाइना बहुत आगे बढ़ गया है. सर, आज इसलिए इस चर्चा में मैं
जवाहरलाल नेहरू को प्रणाम करता हूँ, थैंक यू। इंदिरा गांधी को प्रणाम करता हूँ, ये हमारा स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रणाम करता हूँ और हमारा सतीश धवन और युवा राव, इन लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये सब लोग मिलके हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाया। ये बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्य में श्री लाबू श्री कृष्ण जी। चलिए चलिए, अब बैठिए। आप जब आए तो बोलिएगा इस बात को, जब आपका बोलने का नंबर आएगा तब इस बात को बोलिएगा जी, प्लीज। डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर। देख लेंगे उसको, देख लेंगे उसको, ठीक है, देख लेंगे उसको। यदि आपत्तिजनक बात है उसको देख लिया जाएगा ना, प्लीज। सर देख लेते हैं उसको, देख लेंगे ना, प्लीज। sir, don't take this out of my time sir. It's good to see you in the new chair in the new parliament sir. I thank my party floor leader Mr. Reddy Garu for allowing me to speak on the second day of the inauguration of this new parliament building sir. From YSR Congress and also from all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, we thank the achievements of ISRO. We congratulate the achievements of ISRO. We are indebted to all the scientific achievements they have done in the last 70 or so years, sir. When I was asked to speak on this subject, the first quote that came to my mind was of Isaac Newton, sir, when he said, I was able to see further because I was standing on the shoulders of the giants, sir. We were able to achieve Chandrayaan mission because there were so many people that have contributed to it. Just now, Professor Dada has mentioned about Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, UR Rao, Madhavan Nair, Kastur Rangan. Because of what they've achieved in the last 65 to 70 years, Shivan, all these people have achieved and contributed to the frontiers of the space exploration, sir. Because of them, we were able to achieve Chandrayaan mission to the moon, sir. And I also congratulate Somnath and his team, who was able to place a lander on the far side of the moon, sir. When I was watching it as a tech geek, like all of us, I was so happy for three different reasons, sir. The first one was, it was launched from Sriharikota, Andhra Pradesh. It's my Telugu land, sir. And it has been found to be lucky for all the launches, and they've all been successful, sir. And the second reason that I'm really happy was because of when I was going through the profiles of all the contributors for this success, all the scientists who were involved in this, majority of them came from state universities, sir, or engineering colleges run by state governments, sir. It was a great achievement. They didn't come from any IITs or NITs, sir. They just came from the state-run universities, sir. Third thing that we all should be happy is the participation of women in this endeavor, sir. They all dressed in kanchi saris very beautifully, but they were having that vigor to make sure that our Chandrayaan mission was very successful, sir. But there are a lot of questions raised, not in the Western media, sir, why India is doing this activity when there's so much poverty in the country. For them, sir, there are three reasons. The first one being, we want to cross the frontiers of the science and space exploration, sir. It won't happen just like that, sir. Take, for example, as Dada was mentioning earlier, in 1965, we were human was able to land on the moon, sir. But from the last 50 or 55 years,
the space exploration of most of the countries has actually gone back, sir. We think just because we have something like an iPhone in our hand, iPhone 1 to iPhone 15, some sort of impetus is given, some sort of iteration is given at some point of time. It doesn't happen just accidentally, sir. That's what has been happening in the space exploration. And as a country that is growing, as a country that is in the top 5 of the economies, this is the time to actually push those boundaries, sir. And second reason being, we have to dream big for the next generation. And we have to prove to the next generation that anything can be possible in India, sir. But I, being the member of Standing Committee on Education, I was able to go through the funding that was available to most of the colleges that people like Somnath has gone through, sir. Like TKM College, which was there in Prem Chandra's constituency, sir. There's a funding called RUSA, which was given to the state university, sir. Allocation was around 8,120 crores, sir. It was almost the same for the last 4 or 5 years. If you look at the spending, it's not even 60% of the spending is happening, sir. This spending is expected to take these state universities, state-run universities, from where the scientists who are working in ISRO are coming from, sir. But somehow this funding is not able to reach them. The reasons, whenever we ask them, the state is not contributing 30% or 40%. That is the reason that they always come up with, sir. But who is the person that are actually losing, sir? It's the scientific community of this country. So I hope the minister was here, but I hope the point is taken so that the scheme can be altered, so that the maximum amount of funds can be utilized by all the state universities and state governments, sir. And coming to the women participation, Shashi Tharuji has mentioned about it, and there were some comments from the other side also, sir. There's 20 to 25% of the women participation in ISRO, which has a workforce of almost 16,000, sir. And if you look at the STEM graduates from India, women STEM graduates who are pursuing science, technology, and engineering in India, 43% of them are women, sir. When you compare to US, it is only 34%. When you compare to the developed countries like Canada, it's only 31%. Even in UK, it is only 38%. So we are far, far, far ahead, sir. And also 30% of the research papers across 186 fields, this information I got it from Scopus, sir, are being published by women, sir. But only 14%, even though there's 43% of them are STEM graduates, of them are women, only 14% of the women are participating in STEM-related jobs, sir. Yesterday we were very proud that we have passed the women reservation bill, sir, but these people are putting the effort for almost 15 to 16 years to graduate, coming out with these degrees, but not able to participate in this workforce, sir. Unless we come up with new schemes to encourage them, unless we place the money where we talk, this situation is not going to increase, sir. And third, Minister Jitendra Singh ji is also here, sir. It is regarding National Research Foundation, sir. I wish somehow every Friday the House gets adjourned, sir, and he always gets the time. We always get the time to ask him the question only on the Friday, but somehow it gets adjourned and we never get to ask the question. But National Research Foundation has been envisaged almost 4 years back with the outlay of 50,000 crores that has been mentioned. And until now, not a single rupee has not been, correct me if I'm wrong, but not been actually given out to any of these IITs or NITs or any of the state-funded universities, sir. For the last 4 years, that all these institutes have been actually waiting for it, sir. Mike, please. We can't hear. Yeah. Mike, sir, Mike. Because it's still being structured. So when my turn comes to speak, I'll elaborate on that. Yes, sir. I'll also elaborate on, because out of this 50,000 crores, we thought it's all coming from the state government, sir, but we have been told that 36,000 crores are supposed to be mopped up from the private. Yes. If you can give us the modalities of how you're going to I raise don't it. want to interrupt you, no. So I'll elaborate when my turn comes. Yes, because- You're right. Almost 36,000 will be from non-government sources. That's the difference now. Because Yes. Dada, please. Dada, Baidi, please. Because we are
actually at one of the lowest globally, sir, with respect to the spending on the research. Only 0.7% of the GDP is spent on the research, sir. So that's why I expect the minister to answer it when elaborate it when you're speaking of it, sir. And the other point being, I've been speaking to a lot of the startups who are in the space exploration, sir, and most of them have come up with a request. You are doing PLI, Professional Linked Incentive Scheme, for all the industries, coming from food sector to steel and every other industry. But somehow this PLI scheme is not being implemented for the space technology, sir. So if the minister can actually take it up. And also the second suggestion that they came up with is regarding GST exemptions for private satellite launch service providers, sir. There's a company called Skyroot, which is based out of Hyderabad. They're trying to, the most of the cost that happens is during the launch, sir. And this company, Skyroot, is trying to reduce the cost, like how SpaceX is doing. But indigenously, they're trying to reduce it. So if some sort of encouragement can be given with regards to this, that will be a big favor to them, sir. Because let me put this on record, sir, because there's no disrespect to our scientific community or anything like that, sir. But if you look at GSLV Mark IV, correct me if I'm wrong, it can only put 4 tons into the geostationary orbit, sir. Whereas Long March 5, which is the Chinese one, can put almost 14 tons satellite in the same orbit, sir. And also in the lower orbit, GSLV Mark IV can only place 7 tons of the satellites, sir. Whereas Long March 5, which is of the Chinese one, can put almost 25 tons in the lower orbit, sir. Because there's a huge difference in our payload capacity and their payload capacity. So this can be closed down only if the participation of the private players in this whole thing, sir. So I wish the government, yes, our scientific community is doing exceedingly well with the frugal funding that is available for them, sir. But they will do much, much better if the funding can be increased, sir. And also if the private participation is increased, sir. I'll end up by saying what our Prime Minister has, I keep on quoting, abhi samay hai aur sahi samay hai. I think this is the right time for all of us to do, because India being a country with young population, with a lot of aspirations, so this is the right time for the treasury benches to actually put the money where they're talking, sir. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Pratap Rao Jadhav. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज यहाँ पर जो हो रही है चंद्रयान 3 की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में और उपयोग करने के दृष्टि से किया गया था। मेरे पहले बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पर कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष की यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है और सूरज के तरफ भी हम निकल चुके हैं। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष के दुनिया में अपना भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जज्बे के आगे समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन के युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। अध्यक्ष जी, हमारे वैज्ञानिकों ने 22 अक्टूबर 2008 को 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1
भेजा जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। अध्यक्ष जी, यह सिलसिला यहां नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नेतृत्व में नेविगेशन के कार्यक्रम में भी बहुत तेजी आई। अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध में के दौरान अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था, जिससे हमारी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के छुपे ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठान लिया था कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था और इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। अध्यक्ष जी, 27 मार्च 19 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन दिनों सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बना। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इसमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया। अध्यक्ष जी, इसरो के समक्ष बहुत चुनौतियां थी, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करने और मानव अंतरिक्ष उड़ाने के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीक भी कमी थी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीकी दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं होना, बजट की कमी। लेकिन जब केंद्र में माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार आई, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई और बजट की कमी भी दूर हुई। अध्यक्ष जी, चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर भी काम किया और सफल प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिली लंबी छलांग लगाई। इसरो ने वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी से देश भर में खुशी की लहर आई और दुनिया ने भारत की बड़ी उपलब्धि को खुले दिल से सैल्यूट किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना से मैं आता हूँ, वहां से चंद्रयान मिशन में जो सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब लगी है, वह मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना के खामगांव तहसील से बनाई गई थी और महाराष्ट्र के हिंगोली भूमि में एक शुष्क हिस्सा दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान कार्यों में से एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए LIGO वेधशाला का स्थल बनने जा रहा है। यह साधारण प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार के दृढ़ समर्थन का एक चमकता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक अन्वेषण का एक युग देखा है, जिसने हमारे देश को वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हिंगोली के परिदृश्य को शुभशोभित करने के लिए तैयार LIGO इंडिया प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व द्वारा समर्थित ब्रह्मांड के रहस्यों का
पता लगाने के हमारे देश के संकल्प का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, ब्रह्मांड के बारे में भी यहाँ पर बोला गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय हमारे जो सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में भी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानते हैं, और कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य है उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। 1 मिनट। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कार्य है उसको गॉड मानते हैं, उसको गॉड बोलते हैं। गॉड जी बोले तो जनरेट करना, वो बोले तो ऑपरेट करना, और डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट करना, बोले तो ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांड की समाप्ति, ये तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में समाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये वैज्ञानिक को इसका श्रेय देते हुए हमारे ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनियों को भी मैं इसका श्रेय दूंगा कि जिन्होंने अपने ग्रंथों में पुराने जो 5000 नहीं कई हजार साल पहले हिंदू धर्म के जो हमारे ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये सभी चीजों का उल्लेख वहां पर क्या है। आज चंद्रयान का जो उल्लेख यहाँ पर हो रहा है, अध्यक्ष जी, हम बचपन में जब हमको समझ भी नहीं थी तो तब हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी हमको चंद्रमा की लोरिया सुना कर वहां पर हमको सुलाती थी, खाना खिलाती थी, और आज वो चंद्रमान की जो उत्सुकता थी हमारे दिल में पहले से ही मौजूद थी, और आज हमें यह भी महसूस हो रहा है कि हमारा देश और हमारा देश का तिरंगा वो चंद्रमा पे जाके लहरा रहा है। मैं हमारे वैज्ञानिकों को और उनको पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे एनडीए सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं मेरी भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दिनेश कामित जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों के प्रयास से हमारा देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। सभी भारतवासियों के लिए एक बड़े हर्ष गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना यान भेजा है। अब हम सभी देशवासियों को यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना यान भेजा था। उसके बाद 10 से 15 साल की मेहनत के बाद दोबारा यह समय आया है कि हमारा यान फिर से चांद पर अपना कदम रखा है। महोदय, चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इसके अलावे भारत एवं भारतीय वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। अब हम सभी देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को उनके द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। महोदय, चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना और इन सीटू यानी चांद की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकी मौजूद हैं, जैसे कि लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्शन सिस्टम आदि। ऐसी उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षण जैसे इंटीग्रेट कोड टेस्ट, इंटीग्रेट हॉट टेस्ट और लैंडर लैंग मैगजीन प्रदर्शन परीक्षण की योजना बनाई गई है और इसे सफलतापूर्वक किया गया है। महोदय, चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपनी तकनीकी कौशल,
वैज्ञानिक क्षमताओं और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। यह मिशन युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना चंद्रयान भेजा था और 2008 में ही हमारे संसदीय क्षेत्र सुपौल तथा कोसी में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह बहुत ही बड़े स्तर पर जान व माल की क्षति हुई थी। साथ ही कई रेल मार्ग ध्वस्त हो गए थे, जिन पर आज कुछ खंड भी परिचालन का शुभारंभ नहीं हो पाया है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललित ग्राम से फारबिसगंज तक सीआरएस का इंस्पेक्शन 11 जनवरी को हो चुका है, किंतु अभी तक उस खंड पर रेल परिचालन का शुभारंभ नहीं हो रहा है। बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है, जबकि कई बार माननीय रेल मंत्री से संपर्क करके उनका ध्यान आकर्षित किया, उस पर अतिशीघ्र रेल परिचालन का शुभारंभ किया जाए। जोगबनी दानापुर तथा जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया जाए, जिसे रेलवे बोर्ड के द्वारा जोगबनी से चलने वाली ट्रेन जिनका नया समय सारणी निर्गत हो चुका है, उसे भी हरी झंडी दिखाकर परिचालन शुभारंभ किया जाए। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी 12,527 और 12,528 सरायगढ़ या सुपौल तक विस्तार किया जाए, जिससे सुपौल जिला सहित कोसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के सभी जनता को इसका लाभ मिले। महोदय, इसी के साथ पुनः मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी वैज्ञानिकों को उनके कार्य क्षेत्र में सूर्य की तरह तेज प्रकाश बना रहे और इसी तरह देश को सर्वोच्च सम्मान मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री अच्युतानंद सामंत जी। I would like to thank Honorable Chair to grant me this wonderful opportunity to participate in the discussions regarding success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. It's my first address in this new house that has brought with the historic passage of Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, and today we are to discuss the other momentous milestone of soft landing of Chandrayaan-3 near the south pole of the moon, making Bharat the fourth country to achieve a soft landing on the moon after the US, Soviet Union, and also China. 23rd August, all of us were glued to the screen and were keeping updates of what was happening second by second. Whole of India watched it through group live streams with finger crossed, becoming a part of this majestic lunar mission by heart. And when it landed, there was celebration and joy all over. It was the victory of each of 140 crore Indians. Really, it was the day when we saw the best of the poetic and literary references of Chand in relation with the space achievement. चांद पे घर, चंदा मामा के पास, चांद दिलाऊंगा, etc., and so on. In this regard, Russia's president acknowledged the impressive progress made by India in science and technology. South Africa president celebrated the moment as a significant achievement for the BRICS coalition, while Nepal's prime minister termed it historic. The European Space Agency was thoroughly impressed, and the United States praised the success for its inspirational and historic significance. In this regard, we acknowledge this and celebrate the significant contribution of Indian scientists who made this possible. It is their efforts and perseverance that paid off.
They are shining examples of knowledge, dedication, and expertise. The exceptional analytical abilities of our scientists, their steadfast commitment to exploration, and relentless drive to overcome challenges consistently places India at the forefront of global scientific achievements. Their quest for excellence and curiosity not only solidify our global reputation, but also inspire others to dream big and contribute to the world's knowledge. The involvement of large number of women scientists have contributed to the success of Chandrayaan-3 and India's space program in general, motivates aspiring women scientists like no one else. In this regard, I am happy that several scientists from our state, Odisha, played very significant roles in ISRO Chandrayaan-3 lunar exploration mission. Devashish Mahapatra, Sarath Kumar Das, Atal Krishna Khotua, and Naga Raju, and so many Odias have contributed in this mission. I have to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, his visionary and exemplary leadership to inspire India's space program for human welfare and scientific progress. He has always encouraged science and innovation. Under his leadership, a series of reforms have been ushered which have made research and innovation easier. The celebration of 23rd August as the National Space Day is an example of his love, respect, and belief in Indian space program. Chandrayaan-3 Triumph serves as a remarkable affirmation of Prime Minister Narendra Modi's resounding message, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. I have to express my thanks for his leadership of including common man, everyone in the process, whether it is sports or space launch or G20. Thanks for Jan Bhagidari. Similarly, it has huge impact. It has opened up web of opportunity for several sectors that could boost India's economic growth. It has opened up a new horizon of opportunity for several startups and companies involved in sectors such as space technology, aerospace, defense, and R&D. It will also boost private investment in allied sectors. Coupled with higher budgetary allocation, it will ultimately contribute to economic growth. It also paves the way for an increased scientific temper amongst the youth of India, an accelerated pathway for self-reliance in emerging sectors and technology, and instilling the confidence to be amongst the top 3 economy of the world, solidifying the Made in India image. Lastly, the future of the Indian space sector is vibrant with several major initiatives and projects in progress, continuing government funding and private sector collaboration. India is poised to make an indelible imprint in the field of space exploration and technology. India is and will continue to be in the forefront of the space technology race. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Ram Shiromani Verma ji. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय चंद्रयान की सफलता पर अपने विचार रखने का मौका दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुझे गर्व है कि इस नए सदन में अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का पहली बार मौका मिला है। इसके लिए हम अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, चंद्रयान-3 की सफल प्रक्षेपण में अपना पूरा देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। अब हम वैश्विक मानचित्र पर अपना स्थान रॉकेट प्रक्षेपण के संदर्भ में अंकित हो चुके हैं। इस सफल प्रक्षेपण हेतु मैं इसरो के वैज्ञानिकों,
इंजीनियरों सहित उक्त चंद्रयान के लिए काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को भी, जो दिन रात मेहनत करके चंद्रयान 3 को सफल बनाया है और आज विश्व में भारत पहले स्थान पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण के मामले में पहुंच चुका है। मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी और देश के सभी सम्मानित नागरिकों की तरफ से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि समय समय पर देश की जनता की मांग को देखते हुए नित्य प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक अपनी लगन, परिश्रम और मेहनत से सफल अंतरिक्ष प्रक्षेपण करते रहेंगे। इसी के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता जनार्दन की तरफ से भी समस्त वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Shri Kota Prabhakar Reddy ji. नया सदन में पहली बार बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर जी। I extend my heartfelt congratulations to all of us on the notable achievement of the Chandrayaan-3 today. As a stand here, I want to reflect on the ISRO's history, which started from teeny outwise in the great scientist Sarabhaji ji and becoming the powerful counterpart of the elite international space agencies of the world. As we know, Pandit Jawaharlal Nehru and scientist Sarabhai are considered among the founding further Indian space program ISRO, which today I know for its unique and cost-effective technologies. In this regards, we express our heartfelt gratitude to all the Honorable Prime Minister standing with the Nehru ji to our current Prime Minister and the Narendra Modi ji for the invaluable contribution of the transforming ISRO's trajectory into the historic one, and I pay my respects to all of the scientists from the Aryabhatta to Somanath ji for the having contributed so much to the nation of the mission to the space. ISRO, through its hard work and the achievements, becomes a great role model, not just for the other countries, but also amongst the private companies invested in the space exploration, which ISRO was set up in the 1960s. Moon and Mars missions were not too in the agenda. Even in the for future, the aim was the initiate the space exploration, the expeditions to learn more about the world's space for the benefit of our people. With such clear objective, even in time when in the country was still struggling with issues of poverty and the limited resources, ISRO leaders developed in the style and the products exam maximum benefits within the minimum of efforts. We are very grateful to contributions of our brilliant scientists and leaders of ISRO. Since its inspection, the journey of ISRO from the 1960s to the today has simply been remarkable. Sir, Chandrayaan successful landing in our south pole of the moon was a joyous and the historic moment of the country. The country joined in the elite club of the countries to soft land and on the moon. The successful landing on the south pole of the moon, which no country has ever achieved so far, also shown the technologies programs that India has made so far and the scientific capabilities and the commitment to work to our Indian scientists and the engineers. The success Chandrayaan-3 is not only an achievement for the country to fulfill global aspirations, but also open the avenue for the economic growth across various sectors. In the believed the bolster of Make in India initiative to contribute to the growth. Sir, of domestic companies which are engaged in the developing satellite systems and the
telecommunications. The success of the great missions has also paved the way of the fostering heightened scientific mindset among the Indian youth, accelerating the journey towards the self-reliance of the emerging sectors and the technologies, and instilling confidence position ourselves among top of 3 economics globally. While taking about the many achievements of the ISRO, it is the quality important also take about the extensive role played by the Telangana for our same the Telangana state emerging as the commercial hub of the space related products and the services in the well known that over 30% of the components used in the ISRO highly acclamated Mars orbits missions in the supplied by SME based in Hyderabad. Sir, 1 minute, sir. I can proudly to say that I am the first state that effectively take about the mate waivers and most receptive state of encourage youth and relay space of the behind this was is the dream that turned out of the true overturn. There was no vision of the mission of the Chief Minister of Chandrasekhar Rao and our IT Minister of the KT Ramarao, which is the launch of the space technology framework in the April 23. Telangana government under the leadership of K. Chandrasekhar Rao unvalued, and this is the aim of the blostering private industry involvement in the space technology sector. This framework has been the magic position establishment, the state of the globally recognized the one-stop designations in the technology. And we are the emerging closer to that dream. My launching is the space tech framework and the implementing of the plan initiated to the Telangana state is the intents of the further achievements realize vision the promoting the domestic products and the launch of the vehicle satellite systems and their companies ground the equipment manufacturing and the various other facilities within the state of Telangana. The state's government of Indian can be matched, guided by the vision of the Chandrasekhar Rao Chief Minister, dedicated effect the Ramarao young individuals of the T-Hub established by Telangana government are the achieving the remarks factors and across the various domestic expansional talents in the Telangana, pushing the boundaries, achieving the significant milestones in the nations of the setup and the provide the satellite launch of the history. Hyderabad startup companies spended the door of the new opportunities in the Indian space sectors. 1 minute, sir. One notable achievements in the economy, Skyroof Aerospace Private Limited, which has successfully pioneered Indian the maiden private rocket launches in the Vikram. Yes, setting the remarkable presented. This is the epitome of the Telangana government. Involving the support of the young individuals who are the showing of the talented world and the transforming their brilliant ideas in the reliability through their startups. Further coming up the latest national achievements of the Chandrayana 3, there is a doubt about the mission if the displayed the fact of the Indian will be soon emerge prominent player as the cost of the effective satellite launcher. It is expected that is a will urgent argument of the Indian contribution of the global space of the economy by 8.10%. Honorable member, please sum up. Moreover, expected the believement the Chandrayana 3 is the ending time the influences Indian domestic market as is the expected of the foreign investors respectively of the Indian grow in the space of the research. Yes. Thank you, sir. Okay. Honorable member, Srimati Supriya Sule. Thank you, sir. Is there a cabinet minister present in the house? Please raise your hand. Cabinet minister, cabinet. Honorable Well, a member. cabinet, not for MOS, cabinet minister. Sir, such an important debate going on. There is not one cabinet minister, sir. We can expect ministers. Sir, please, you must put it, sir. It's such how serious they are about Chandrayaan 3, sir. Yes. It's such a we are so proud of what has happened. Sir, you must give a ruling. There has to be one cabinet minister here, sir. Message will convey to ministers. Sir, please put it on you can record. start. There is not one cabinet minister for such an important debate. Sir. Your point is noted. It will convey to ministers. Please They do, will sir. convince. Please give us. You can start now. Aap ruling Nada dijiye, bhai. sir. They don't have any right Not to a insult single like this, cabinet sir. minister. That's really Yes. shameful, sir. We Sir, can I'd like to take this opportunity to congratulate the success of Chandrayaan 2. Every scientist and
technocrat that has contributed in this 60-year journey. So I would like to congratulate everybody who has contributed in their way. Success of Chandrayaan is about competencies, capabilities, and capacities of people who have contributed in 60 years. Sir, I was very fortunate enough to grow in a city of Mumbai, which had Nehru Science Center and Nehru Planetarium. And I was brought up completely with a scientific temper. I see this whole debate actually with absolute respect to Rajnath Singh ji, who we always look up to. So today in his speech, I had a slight disappointment in his speech because I was expecting him to give us the vision of tomorrow, Chandrayaan 4, 5, 6, Aditya L1 further. But that really lacked, so I was a little disillusioned today. And I am very strong about tradition, about values, about culture and heritage. These are all the things we are all brought up with. But today as a proud Indian, I felt from the treasury benches that completely lacked in the speeches that came from me. I will not repeat the points about Dr. Tharoor and Dr. Roy said, but I would definitely put it on record that it was like Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Sarabhai, who we grew up learning and reading about. It was Dr. E.V. Chitnis also, who substantially contributed in the growth story of ISRO. And it was, of course, Professor Dhawan, Dr. Brahman Prakash, who was one of the best metallurgists India has ever had. U.R. Rao, Dr. Nair, Dr. Kasturanga, Dr. Krishna, Dr. Shivam, and now Dr. Somnathan, who have contributed to the growth of ISRO where we are today. Sir, the Honorable Prime Minister always talks about indigenous growth of India. I would like to put it on record that I was very fortunate enough to get elected from a constituency called Baramati in Pune district in Maharashtra, sir. I'm very proudly happy to share with you, sir, there's an industry over 100 years started by Walchand Hirachand. It's called the Walchand Nagar Industries, which 100 years ago started innovation under that leadership, and the entire Doshi family and the Lalchand Walchand family today have contributed to the growth of that area, which is Indapur, which is in my constituency, Walchand Nagar, sir. And they have made immense parts to this entire Chandrayaan जो बना है सर, उसमें वालचंद नगर की और इंदापुर की बहुत बड़ी देन है, और ये सब वालचंद हीराचंद ग्रुप ने बनाया है. तो 100 साल से फैक्ट्री इसमें एक काम कर रही है, और मैं आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने 100 साल में जो काम किया, इंडिजिनियस जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये वालचंद ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान. इसरो के जो पार्ट्स बनते हैं वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र है कि मेरा भाग्य कैसे निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन के आती हूँ सर. वैसे इनोवेशन की जब बात होती है तो और दो है कि खेड़ शिवापुर जो एरिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, वहाँ VCB इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक कंपनी है, VCB इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ भानुदास भोसले, सुजाता भोसले, संदीप चौहान और सोन सुंदर ये वेयू एरिया में है, जिन्होंने चिप्स बनाई है सर जो इस चंद्रयान में गई है. तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दो बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एक वालचंद ग्रुप का और दूसरा VCB इलेक्ट्रॉनिक्स का. So I feel very very proud when I stand here where we are praising about Chandrayaan, and these are all indigenous. और ये सारी कंपनियां सर 2001 तो 100 साल पुरानी है और दूसरी 15-20 साल पुरानी है. So I just would like to put on this record straight. And there are other companies which are doing wonderful work in my constituency, like the hydrogen technology, sir, software, be it Wipro, be it KPIT, Tata's, Mahindra's, they've all contributed to all these works that are going on, sir, in the new development of the new India. Sir, the whole thing which Dr. Tharoor also mentioned and Professor Roy also said was the spirit of inquiry and the spirit of questioning, sir. The entire debate today, somewhere I felt that we are very proud of our glorious tradition, sir. Be it in mathematics, be it in metallurgy, and be it in astronomy. India is very proud. 2000 years ago, mathematics, something that everything goes around. Unless तुम्हारा गणित अच्छा हो, life में कुछ नहीं हो सकता. So we have such rich tradition. So instead of getting trapped into stories, which people were talking about earlier in the debate, I'm not condescending. It's wonderful. Whatever your mother has taught you can never be wrong. But we must not forget the rich tradition of mathematics, metallurgy, and astronomy, which India is so proud of. Because श्रद्धा तो होनी ही चाहिए सर, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए. So श्रद्धा जो आपको सिखाया वो जो आप चाहते हैं उस पे आप विश्वास रखिए, वो आप, it is in a democracy, it's your right. But the problem is I get worried when people in position of power and who are sitting on that side of parliament today talk about issues which actually surprise me when we are talking about the scientific temper. मेरे महाराष्ट्र में सर पिछले हफ्ते एक डॉक्टर आया था जो ब्लैंकेट्स डालता है लोगों पे.
और ब्लैंकेट डालने के बाद वो बोलता है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सर आप सोचिए, एक तरफ हम लोग चंद्रयान 3 की बात करें और दूसरे जगह एक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बोल रहा है कि ब्लैंकेट डालिए आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये कैसे चलेगा? तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और आपको याद होगा सर, बी एड Sri Dabolkar, Sri Gauri Lankesh, Govind Pansare and Kalburgi ji. What were they? How did they die, sir? Because this was whole conflict which we are. And I think this was a debate where we only should discuss about scientific temper. तो श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अंधर श्रद्धा के खिलाफ महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा दाभोलकर जी ने बहुत मूवमेंट चलाया था। हमारे यहाँ बिल भी है कि अंधर श्रद्धा के खिलाफ सबने एक्शन लेना चाहिए। और जहां पार्लियामेंट में अंधश्रद्धा के बारे में कहा जाता है, so somebody like me who believes in questioning and wants the next generation, तो इन चंद्रयान बैठ के हमारे बच्चों को हम अंधश्रद्धा सिखाएंगे तो देश आगे कैसे जाएगा सर? So we have to have a scientific temper, and I would like to quote Dr. APJ Abdul Kalam ji when he said, "Dreams are not those which come while you are sleeping." Sir, dreams are not those which you come into reality while you're sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. So I pay a rich tribute to every scientist and technocrat in this country who have contributed in the last 6 decades to make Chandrayaan 3 a reality. Thank you very much. Thank you very much. Sri Prince Raj ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता और स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पे बोलने का मौका दिया। मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, आज इस नए सदन में प्रथम भाषण देते हुए काफी खुशी और काफी गर्व महसूस हो रहा है। आज का विषय कोई पॉलिटिकल विषय तो नहीं है सर, और ना इस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन कल जैसे राज्यसभा में इस पे डिस्कशन हो रहा था और आज लोकसभा में हो रहा है। कई माननीय सदस्यों को हमने सुना, जैसे कल लोकसभा में महिला बिल पर चर्चा हो रहा था और आज चंद्रयान 3 पे हो रहा है, तो कुछ माननीय सदस्य के भाषण से लगा कि ये क्रेडिट टेकिंग मूवमेंट बन गया है, कि जब बिल लाया गया उसमें कहा गया ये बिल हम पहले लेके आए। जब चंद्रयान 3 पे बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि इसरो की स्थापना हमने की।